Rahul Gandhi ji da is election girbam batung da harau tayam labang asi Congress ke warga khodi makki mafhum da party ke president Shri Loken Singh na welcome with the speaker gane party president Shri Loken. I, on behalf of Manipur Pradesh Congress Committee, warmly gratefully welcome Shri Rahul Gandhi ji, Honorable MP and Congress leader, on your special visit to the state of Manipur ahead of the upcoming State Assembly election to be held on 28 February and 5 March 2022. We thank you for the coming here and giving us your support and encouragement in this hour. Truly, we are the blessed that you could grasp us with your presence and guide is in the making the goal and the mission of the Indian National Congress clear to the people of Manipur. I will also like further express my utmost happiness for your August visit. I also further welcome Shri Jairam ji, Honorable MP and Senior Observer Manipur AICC. I also welcome Shri Bhaktacharan Das ji, Honorable former Union Minister in charge of Manipur AICC. I also welcome Shri Okram Ibobi Singh ji, Honorable CLP leader of Manipur. I also welcome Shri Gaikham ji, Honorable CWC member AICC. I also welcome Shri TN Haukip, Honorable MLA former President MPCC. Shri Okendra ji, former President MPCC. Shri Pradul Roy ji, Honorable MP Election Observer Manipur. Shri Rakibul Hussain, Shri Honorable Deputy CLP Leader, Election Observer, Manipur. Shri Therie, Honorable President, Nagaland PCC. Shri Thoksam Maina, Honorable ex-MP. Shri Thangso Paite, Honorable MP, Manipur, ex-MP, Manipur. Also, I welcome all the election observer and the functionary from the AICC and from outside the state. I also further welcome all the honorable MLA, ex-MLA, ex-MP, office bearer of MPCC, frontal and cell department, PCC member, and DCC, BCC spokesperson, and the media panelist, party sympathizer, party leader, and the Congress worker. Aduna, ngasida, lengbilang di bakwai punamakta, amasung ngasigi program asibu coverage tawbiriba pril electronic ki maru mapang khwai puna makpasu aina party ki site ki aikoi MPCC ki site ki taram na okchari aduga iroina na aina welcome ATS PBC khudong chaba lawjarakanda ngasigi Manipur ki oina aikoi phase ani thokna pangthok kadawriba adugumba first phase ki oina February ki kunipal aduga second phase ki oina March ki tarik Manga adugumba phase ani thokna pangthok kadawriba sigumba aikoi meeting asida aikoi hadaki lakadroba kendra humpu makta intending candidate oibirkadroba respected candidate sing aduna ngasigi tinbiriba aikoi ki kendra humpu dagi lengbirakliba khwai punamakta aikoi punna ngasi Rahul ki jina aikoi ki Manipur da lakpidana aikoi ki Congress ki adugumba mapangal kangkhatpa honariba asida aikoi punamakna saruk yaminare haraka ngasigi adugumba Bharatiya Janata Party na party mga nagapulla semba adugumba sahi mga pharaklaba sasol sigumba sasol sina ngasida Manipur praja miyamgi
amasung singam na tamda lairiba Manipur praja miyam da ngasi da sindana amangang ba thabak na ama tauba sumna tagi thabak ti yaw da ba sin khakta ngang ba sigumba sa solasi handaki lakadori batra in suba Manipur Vidhan Sabha ki election sidagi di Manipur praja miyam na ngasi da lairiba Bharatiya Janata Party na sigumba sangchal liba khongjang si Mani Power amasung Masan Power sigumba kaya ka loina na sangchal liba election asida ngasida Manipur ki kendra hukumakta laibiriba amasung Congress pun nung sibiba adugumba praja singna Shri BJP na ay koy kita Manipur ki lakador ba election khuding magta amasung lakador ba election sita makoy na Masan Power Mani Power si thengna ba ngamgada ba di ay koy na Congress na kaydong ida Mani Power ta amasung Mani Masan Power ta thengna ba ngamoy aduna Indian National Congress ki adugumba ba khubak yak ba marka siguma khubak yak ba marka asigi de yor ba kwaidagi makok thangba khubi sigumba khubi sina ay koy lakadori ba adugumba ba February ki kun ki nipar amasung March ki manga da thada kador ba sigumba election sida yamna violence oina changal ba Bharatiya Janata Party ki adugumba ba sa sol je inthuna ba hona bada ai koi punna vote pinna minarachi haiba wafam kharje thamja ba loina mayam punna makko amukka hanna khoiram jeri jai hind. Organizing Committee of Manipur Pradesh Congress Committee requests the security establishment kindly to clear the 7,000 Congress workers standing outside to participate in the rally meeting. Thank you. Matang Sidi. Honorable Congress leader Shri Rahul Gandhi the party ke legislative party ke leader Shri Okram Ibobi CWC member Gekangam ji amasung party president Shri Loken Singh ana Ninkham Samji Hupiba Lengyan Yanviba amasung Congress Party na Khudol Tamjag the painting of the PB with the Mukta Kopsun Zari. Please. He will speak. People are coming in now. Yeah. Therie, you will speak like that. He will speak like that. Therie, Ibobi will speak. Rahul. Okay. Before Rahul. Whatever you say. Yeah, it is already there. Yeah. People are coming from outside. They're all outside. Yeah. Good. All other mementos, please. Frontal, sales department, anybody who wants to present, please come forward to the front of the stage. The program proceeds. Thank you. Thank you. Be fast, be fast. Thank you all for the care and the love. Akwai Lamlai Assembly Constituency dagi lakpiri bapum namak Nongchup amasung makha thangba kachinda leiba chair siom de lengchen binaba request taujari organizing committee dagi amukhana lamlai kendra dagi lakpiri ba party ke worker punamak nongchup amasung makha thangbagi kachinda sida leiriba hangba chair sing se occupy tawbi haina request taujari
I call upon K Therie, President Nagaland Pradesh Congress Committee. Please, sir. Can I speak in English? Sure. It's okay, no? Most respected leader of the Congress, Shri Rahul Gandhi ji, my dear Manipur Congress Committee, Congress President, Honorable MLAs, All India Congress candidates, my dear brothers and sisters, I will not waste time naming one by one. They're all very important and dignitaries here today. I wanted to take 2 minutes to convey the feeling of congressmen and women of Nagaland to the people of Manipur. We are brothers by way of Mongoloids. We are brothers by way of religion. We respect all religions, all communities, all tribes. Manipur would have been incomplete without Métis, without Naga tribes, without Kukis. We are complete when we have equal justice, equality and justice. And that can be only found in Congress. I want you to decide only on 2 issues. One is either you stand for socialist, secular nationalism, or you stand for Hindu nationalism. That is the understanding of the Northeast. We, as the Mongoloid race, we don't fit in other situation more than socialist, secular nationalism. And that has been provided by Indian National Congress. And therefore, we are with Union of India. This Northeast should not misunderstand. My ambition, I think this is also your ambition. The first ambition is to remove BJP, communal party, communal government, so that we can make Rahul Gandhi the Prime Minister of India, under whom we will be all free. All the problems he will take care. You will have the freedom of religion, freedom of social practices, freedom of your culture, custom. You will have freedom, and he will give all the protection. He will solve all our problems. His ancestors, Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, have given all what we have today. And I'm sure the blood of these great leaders run in his blood, and he will treasure it to take care of us. Therefore, let us trust in him. I don't feel any BJP leader had that quality, that assurance, which we can treasure and have faith in it. I therefore appeal to the Manipur voters. Today, Congress hard workers, you have come here. I appeal to you all to reach each and every house, every home, as you go home, as you go back to your respective constituencies. Thank you. Thank you, K Therie, President NPCC, for the wonderful speech. Next, I call upon
Manipur Pradesh Congress Committee's Legislative Party Leader, former Chief Minister Shri Ibobi Singh to the dais. Kai Kumnajariba Shri Rahul Gandhi ji, Kai Kumnajariba Manipur Pradesh Congress Committee ki President Shri N Loken Singh ji, Kai Kumnajariba Hojikta Mayam gi mafam da wafam khara thambi khriba akhoi gi hek yum thang na bada leibiba Manipur ka chap manabani Nagaland Pradesh Congress Committee ki ikai khumnajariba President egi Marup Therie ICC dagi lakpiriba Manipur ki incharge Dr. Charandas ji adu election observer laiba Trying to Raksuba Manipur State Assembly ki election ki observer when Lakpiriba Jairam Ramesh ji Hanagi PCC ki President Kai Kumnajariba Shri Tiren Haukip ji Shri Morang Them Okken Kendrajing si Aru Yambaru ina Anda kitarani thoirak suba assembly election sida candidate woy bigadoriba Indian National Congress ki candidate woy bigadoriba Honorable MLA Singh aduga ex MLA Singh nauna Indian National Congress ki candidate woy bira aba maruk mapang Singh pumnaba aduga PCC ki office bearer Singh Press amusung media ki both electronic aduga print media ki maru pangsing kwai dagi maru ibadi mang de election biriba Manipur ki kendra hompu sidagi lakpiriba Manipur si sahi manga se mamure huje anganba Manipur ama Congress na sason tauba amu Anganba Manipur ma wuhelasi haiduna lengshin biriba kendra humpudagi lakpiriba kai khumnajarba halaman laigru singh imai ben se nem singh shatra singh congress ki saknairaba district tagi lakpiriba district president singh block president singh mayam punamaku aina ngasigi meeting asiga Mari lainana wafam khara thamjadri da mayam punamaku ai kok non khuramjari mayam ne hena khangbire madudi tarani thoirak suba state assembly election si tangtak ani thokna chaliba February ki tang 19 da hanba phase ki vote thadanagadori anirak suba phase na March ki tang manga da thadanagadori bani masigi election sina Manipur gi amasung Bharat ki laibak lepa haiba tare bhai ga vidhata akoi lepkadori bani aduna lengshin biriba ahong ba awon ba Congress ki government ama purakta ba yade haiduna arap padagi lakpiriba halaman dairu singda Congress pu nungsibiu Congress party bu prajamiyam gi Manipur gi sason amukta tahonbiu haiduna ai ahan bada keno taujari mayambu ai khuramjari aduga ngachi asi laibak phaba haisira laibak thiba haisira ayukta nong singi phibam khara phatta baduna mai kai khuding dagi telephone taunarakpa mayam sina ngasi asibu election Rahul ji
Manipur lakpase masigi meeting si yagadra yaroidra haidana yam toin hangnarakpa aduda ishor leiri ishor na Manipur se haukiba BJP gi sason Bharata tauriba Shri Narendra Modi ji gi sason Manipur gi ko BJP na lusingba sigi sason sina Manipur Bharat natana Manipur da kari laibak ta lakadage akhoi si kari phim da lakadage sigumba tangdu laita da ba phiba mama lakpas leida ishona sinba ama sungsoi soidana lakani noi karim ta singna birunu haidana lakpiu haidana honorable candidate singi honorable MLA singi tongan ba district tagi telephone tawrakwa mayam adu aina adum mayamda khoigi PCC gi president ne khoina ishona tambam lakani noi karimta nungsa thiganu haibasi hojik mayam ubiredna hojik mayam ubireba laiba weather mata se Rahul ji na sigi complex the head yorok pusda khoidi nungsa thirubani karigumba weather gi phum nong nungsit ki phim si lairam dragadi kaya yamna Manipur ki praja sing si Rahul ji ki visit se masigi da mukta da lakani haibasi mayam uta khan yengwiu hojik phawda lakpa leptri basini masina takpadi Manipur da ahongba ama change ama pame haibasi masi takpani aduga aina thamjaningba amana masi hainaba waramba yai sumamba yai suramdamba yai whether it may be honorable prime minister's visit or honorable national president JP Nada's visit or home minister of India's visit every participant in the meeting they are paying minimum per participant from 200 to 500 rupees meeting yawiu haidana lupa chani deina changa phawba piraga mi khomi haibase ai tajabani masi it may be here say it may be wrong aduga akhoi gi sida laiba Rahul ji gi visit ta laiba mayam singse mayam haibiu ba naya paisam ta pige lau haidana honorable MLA sing candidate sing na khombra noi seng na haibiu ba Masini BJP ki sason haukiba chahi manga se Manipur da leiba praja sing se apangba prajang haktani paisa khara na heta paisa khara utlage heta yani paisa na vote leiba yani haiba sigumba mentality se now the time has come we should have to teach them a lesson sigumba the most communal waiba BJP ki sason se parama tambiduna Bharat tagi amusong Manipur tagi maru phangna khoi muthatlasi haiduna ai lakpiriba praja khuding makta ai kenot appeal taujari adu natragati Bharat ki laibak Manipur ki laibak khoi krai da laigani haibase mayam pumna makna angtang khallagi yengbiu every alternated week or every alternate day Modi ji na Delhi se Manipur da lairabani hairine every alternate day every alternate week all the union minister visiting Manipur including honorable prime minister how many times he had visited Manipur kayarak hanna prime minister honorable prime minister Manipur da visit tawre kari Manipur da mana kari tawbirage kari lapthok piramage ba aduka all the honorable union ministers in Manipur lakpase phagi bu maleba radio da khabar da yaura ga khangneba union ministers in Manipur da lai haibse ai khoi gi di honorable prime minister hanagi Dr. Manmohan Singh Madam Sonia Gandhi ningsing biu anirak khapta la ambani ahan balla ambada
अखोइना हाइजबदगी मणिपुर की लाइफम ग चप मानरब कंगला मणिपुरी प्रजा सिंगना पामी मसी अखोइदा सिनबियो हाय सिनरंबा मणिपुर जी सेंथोक लेजदबनी मणिपुर यूनिवर्सिटी से सेंट्रल इलेक्शन ब्यूरो अदुगा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन ब्यूरो हाइबदो अमुक लांबदा कंगला सिनर में मणिपुर यूनिवर्सिटी चलगा कन्वोकेशन यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन दा मणिपुर यूनिवर्सिटी से अखोई सेंटर ने इलेक्शन लबनी ने लाथोमी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सेंटर ने इलेक्शन लमी मोदी क्यारक लामे मान करी लाथोगे मान गट लेरबा थौना लेरबा अखोई स्टेट आउन मेडिकल इंस्टीट्यूट जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और धनमंजूरी यूनिवर्सिटी मणिपुर इंडिया गवर्नमेंट ने इलेक्शन लेना मान गट लेरदे उंत लाथोपिउदना मसी अखोई बीजेपी दा हंगिमनेबा बीजेपी दा हंगिबा क्वेश्चन नेबा मसेबा अदुनतना सिदा लागा स्वास्थ्य भारत करी करीनो स्कीम से अखोइने हिंदी से क्या मुन्न खंगदबगा मसिंगबु खंगदे मोइगी स्कीम मयाम से ngahak lerga gas cylinder lem na pini hai gas cylinder amaga stove amaga lupa lising mari pibado ngasi gas cylinder tara amu puraga pire na lauthom gani nongalagana cylinder amada lising ani hena black ta mamanji hankalan gani tanana leiba ngamdauri gas cylinder da mu yontokhi ba tabane ba stove to amuk yontokhi ba tabane ba machine yengbiyo ba adudagi अनिरक सुना अहान बल लापदा मणिपुर यूनिवर्सिटी सेंट्रल इलेक्शन बीखरे डिदेन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अदुगा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन बीखरे कंगला मणिपुर की प्रजा सिंदा हैंड ओवर तौबिरमे अदुगा मणिपुर से कनेक्टिविटी से यामना खुदोंग सादरे हाइदना एक्सटेंशन ऑफ रेलवे लाइन फ्रॉम जिरीबाम टू इम्फाल भया तुपुन जत्रा हुलमे मधुसु जत्रा है हुनबगा खुदक्ता मसी इट शुड बी ए नेशनल प्रोजेक्ट अने लाउथोमे हौजिक फावबा अखोइगी मतमदा 60-70% हेन प्रोग्रेस लहरबा रेलवे प्रोजेक्ट तो अमुकना हाइनी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी बाय 2020 ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की स्टेट कैपिटल सिंचे रेलवे हेड की होनगनी अमु हाइजली हौजंगना मुक करी हाइदोइबा हौजंगना मुक करी हाइगदोइनोबा सी पुमना मक्सिंग से मोइना लोइना तौबा सादना हौजिक सी मोइ अदु ngaptani मोइगिदि मीना तोरमसे देन अदुदगी ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी अमुक लाकनी अखोइगी मतमदा एशियन डेवलपमेंट बैंक तकी उखुल की कामजोंग से चटपदन नुमित निनी संगी मेन रोड तक चटप तारगदी हाइदना इम्फाल तो कसोम खुलेन भैया यारिपो एशियन डेवलपमेंट फंड की लोयरमब थबक तो अमित शाह जी ना अमुक लागा मधु इनॉग्रेशन तौगनी अदुदगी अमुक लापदना अखोइना मणिपुर से आईटी हब उहेंजी हाइदना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया लंफेंदर लैबा एनआईटी अदुदगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री पुखरीदा टेम्पररी कैंपस दा अहान बगी बेस सही मरी की बेस अमल लोइदना डिग्री कोर्स की बेस अमल लोइखरबा अनी सुब चंगल अबदो मोइना तौब सादना मदुगी परमानेंट कैंपस से तंपाक्ता ngakta इंस्टीट्यूशन सिंगे थंब तारगदी मसी सिंगी सिनाउसना वखल अमा खल्लनी हाइदना मयांग इम्फानदा मयांग खांगदा 150 acres around 7 crore चंगना एक्वायर तोरगा परमानेंट कैंपस से IIIT से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मदुदैदा 31/33 kV सब स्टेशन मदुदैदा छादना 24-hour power available होइनना बन लेरमबनेबा मसी around 14-15 अदवाइन को 2014-15 अदवाइ जुदा अदु हुजिक लागा माना फाउंडेशन स्टोन ले तौरीने मसी हाइजन नब्र खक अमत नते
मसी बीजेपी ना उतंग सेंगतोकपियोबा अमित शाह जी ना उतंग सेंगतोकपियो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उतंग सेंगतोकपियोबा आई एलिगेशन के वानते असेंगबा मोइना तौबा सिंगतुनेबा सुमाइना हाइजल लगा खुंगंग दे चलो सिंह दे चलो खुंगंग दे चलो ने लागा खुंगंग दगिसु मयाम याविरमगनी मांगदा लेंसिन बिबा मयाम से खुंगंग दे चलो ये खुंगंग दे चलगा ऑनरेबल प्रधान सिंह जिला परिषद मेंबर सिंह वार्ड मेंबर सिंह तौगदबा ऑल एज की फॉर्म खरा पायरगा से सी मेंशलो ना आई हाइजे ऑनरेबल प्रधान सिंह बो हंथन येंजबई वान नचदेको लोकल बॉडी की मयाम सिना मतेंग पांगगा तौजगदब थबक तो ऑफिशियल सिंह चलो खुंगंग दे चलो ऑल एज पेंशन फॉर्म खरा पुगो रेशन कार्ड फॉर्म खरा पीगो डिस्टर्ब तब लाइबा आद लाइबा मयाम प्रजा सिंधु डिस्टर्ब तब लाइबा हाइरुरगना गवर्नमेंट से प्रजा बु नुंगसीबा खुंगंग बु नुंगसीबा सिंगी प्रजा सिंबु नुंगसीबा हाय नुंगसीबा साधना गो टू हिल चलगा सिंगी डिस्ट्रिक्ट मिनी सेक्रेटेरिएट अखोई मतम दे सारंबा ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अदुगुंबा अमते साबराबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमते साबराबा सब डिविजन हेडक्वार्टर सिंगी हिल एरियाज इंक्लूसिव प्रोग्राम की मखादा सारमीबा इंफ्रास्ट्रक्चर मयाम दो अमा भवा मोय साबराबा अदु चलगा करोड़ मंगा तरुक तय चंगबा अखोइना लोइना मतम अमतदा कवर तौब ngамदबा इमा मार्केट अमा सारगा सिंग चलगा उखरुल चलगा 400-500 पैकेज लाउथोकपा तांगपोकपी चलगा लाउथोकपा तमेंगलोंग चलगा लाउथोमबा सिंगी प्रजा सिंग सिनाउ सिंगसे अपंगबनेना खनब्रा मोइना लाउथोमबा पैकेज मयामदो करी तौरगे बसिंग द मोइना लाउथोमबा पैकेज मयामदो मसी उंगते येंगबियोबा सिगुंबा मणिपुर के प्रजा सिंग से अपंगनी हाइनो खनबा सिगुंबा बीजेपी की लांगदगी अखोई सही मंगा से नहानदगी तुमिन अखोई येंगगा लापनेबा हौजिक्ति लेंसिन बिरिबा मयामदा आइना अपील तौजनिंगे मतम अमदा अहानबा मणिपुर दा गवर्नमेंट लाकपा मतमदा सेंटर दा लैखिद्रबा लाइवैख्रबा मतमदुगे प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ना प्राइम मिनिस्टर होइबा एनडीए की अहानबा एनडीए गवर्नमेंट दो आदा लैबनेबा 2002 दा अखोई मतमदुदा इहान हान मणिपुर दा कांग्रेस ने लुसिंगबा फ्रंट अमना सासोन तौजबनेबा मद सीपीआई यावरे अदि मणिपुर स्टेट कांग्रेस यावरे कांग्रेस पार्टी ने लीड तौरगा कोलिशन में तौबनी हौजिकसु वाखन मानबा लाइक माइंडेड लेफ्ट पार्टी सीपीआईएम फॉरवर्ड ब्लॉक आरएसपी अखोई पुंझल लगा हौजिक मतम में लाए वाखन मानबा अखोई मयाम तौरगा बीजेपी शुड बी डिफीटेड बीजेपी से माइथीबा पीगदबनिना हौजिक फ्रंट अमा सेमगा कमन मिनिमम प्रोग्राम सेमद्रा हौजिकती लाइबा इलेक्शन सिदा 2002 दा मणिपुर की प्रजा मियामना अखोइदा राय पीबीद्रा इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी लाई वोइख्रबदो माना प्राइम मिनिस्टर ओइबा मतमदुदा भारत पुनमक निनग्रमनिको इंडिया इज शाइनिंग अन भारत पुनमक लाउग्रमनेबा अदुरसु मणिपुर की प्रजा सिंगना बीजेपी नोइना तौबा थोक तु खंगे हाइदना प्रजा सिंगना क्लियर राय अमा पीदना 2002 दा मणिपुर दगी हौखिबने 2002 दा कांग्रेस लेड गवर्नमेंट अमा लाखिबदगी बाय 2004 दा अमो यूपीए गवर्नमेंट लाक्तना डॉक्टर मनमोहन सिंह ना प्राइम मिनिस्टर ओइ लागा अमुक अनिरक मैदाम सोनिया गांधी का लागा इमा मार्केट खंगे कंगला खंगे सिविल सेक्रेटरीट मयाम पुनमक सिंह दा तौर इंफ्रास्ट्रक्चर मयाम सिंह से मयाम लोइना उबिरबनी अदुना 2002 दा तौखिबा अदुमाई तौदना मणिपुर की प्रजा खुदेंगमक्ता केंद्र हुंफुदा लेबा मयाम पुनमक्ता आई खुद लोनना हाइजरी अखोई यामना पावर पाम्बगी वानते हुजिक लेबा ट्रेंस दा नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी गवर्नमेंट से मक्थंगदा मुक चथबा तारबा मादी सुखसोई सोइदना अखोइना थाजजबदती बाय 2024 ददी
Narendra Modi government Hanagi India is shining and Haramado Narendra Modi government suk soy dana chat khargani aduna haujik mayam karimta BJP na threat tauba ngangba haiba khotba karimta kibiruganu koi noi gi dangta da akoi Congress party na sirabasu thawai thadobsu thadokke hujik leiriba BJP gi government aduga Shri Narendra Modi jina lusingba central government se sum leiraba Manipur da Congress na led tauba government se sorry BJP na led tauba government se sum chathaba targadi Manipur gi laibak se karai da chatkadagi haibasi yamna chingningai oiba Manipur si kari ohogudage haibase masina akoina Congress party na like minded party sing si tawraga akoi mayam punamana tang nungsibiyo Manipur se akoi India se kanba darka oire matam ama lae democracy se akoi kanba darka oire haiduna akoi mayam punamaki mafamda khud jur tawduna haijebani handak thada gadoriba phase ani thona thada gadoriba election February 28 ta hanba phase ani shuba phase dana March ki manga da thada gadoriba sidaida mayam punamangna Congress ki khubak yekpa marka da vote pibi duna anauba Manipur da Congress na absolute majority oidna or natraga karigumbada kajitang ama ni wat patar so koi wakhan manaba mayam singse punsan naraga anauba Manipur ma chahi haukiba chahi manga do amamba Manipur ama oikibado amokhanna ngal halasi haiba ai wafam kharchi thamjaraga mayam punamakta gi bidai laujage jai hind. Thank you, Honorable CLP Leader. Pazarba wapam kaya amasung tungda lakadaba rajniti ki permit kaya ki matang thamiri matungda miyam punamangna chon na thallaba hapta kangjai bunga sida election campaign ke namakta lakpiriba mayam na khawrang nang amasung nungsi na ngainariba Congress Party ke leader Shri Rahul Gandhi ji, I call upon you, sir, to deliver the speech to the exciting crowd awaiting for your arrival. Thank you. भक्त चरण दास जी, जयराम रमेश जी, and Loken Singh ji, Ibobi Singh ji, Rakibul Hussain ji, Gaikhanam ji, T.N. Huakip ji, Ukendra ji, Pradyut Borduloy ji, senior leaders on the stage, Congress workers, brothers and sisters, friends from the media, I'd like to welcome all of you here today. Kuram Jari, Kuram Jari, Kuram Jari. A few days ago, I spoke in Parliament about the situation in our country. And over there, I described our country as a union of states. And this is the definition of our beautiful India in the Constitution. In the Constitution, we chose to define ourselves as a union of states. The BJP and the RSS reacted
to my speech. They did not like that I said India was a union of states. There are two definitions of our country. One definition, that it is a union of states, a union of people, where every single state has a right, an equal right in India. Every single state has a right to have a language, a culture, a history, a way of looking at themselves. This is one vision of India, the vision that we believe in. There is also the BJP vision, which we fight. Their vision is that there is one ideology, one idea, one language that is superior to all the other ideas, all the other languages, thank you, all the other cultures. This is the battle that is taking place in India today. So when the BJP comes to Manipur and the RSS comes to Manipur, they come not with respect, not with understanding. They come with a sense of superiority. When I come here, I don't come with a sense of superiority. I come with humility. I come with humility because I understand that you have a lot to give. I come with humility because I know that there is a lot I can learn from you. From the diverse tribes, from the valley, from the hills, from everybody here, there is something I can learn from your history, from your culture, from your language, from the way you treat your women. There's something that I can learn and I can take back with me when I go home. That's not the idea that the Prime Minister comes with. Prime Minister comes with the idea that he has a superior vision. He has a superior language. And he has the right to define India. This is the difference between us. I want to help preserve your language. I want to help preserve your culture. I want to help preserve the harmony that is prevailing in Manipur. I want to learn from you. And of course, I will also have certain things that I might say that you might take away from, benefit from. The Prime Minister comes here to tell you what he thinks. Prime Minister comes here with an air of superiority. I gave this speech in Parliament and I mentioned in Parliament something that I did not like. I mentioned that I didn't like that the Home Minister of India invited senior leaders from Manipur to his house
and then made them take off his shoes, but kept his shoes on. And while I was giving the speech, one of the senior ministers in the Lok Sabha, and you can watch the speech, one of the senior ministers in the Lok Sabha said, "But this is our culture." Well, it is not my culture to invite someone to my house, force them to take off their shoes, keep my shoes on, and humiliate them. It might be his culture, it might be that minister's culture, it is not my culture. And I would like to tell the minister that it is also not Indian culture. Indian culture is to respect your guests. Indian culture is to honor your guests when they come to your house. If your guests take off their shoes, then you should take off your shoes. If your guests don't take off your shoes, then you keep your shoes on. This is Indian culture. Now, what are they doing to Manipur? They are coming here and they are assaulting not only your culture, not only your history, not only your traditions, your language, but they are taking away your democratic structure, your democratic institutions, your democratic values. For example, they keep saying that they're going to take governance to your doorstep. But they have not held Hill Council elections over the last 5 years. How do you take governance to your doorstep if you do not empower the people of Manipur, if you do not allow the people of Manipur to hold elections? नरेंद्र मोदी जी 2014 में बहुत वायदे करते थे, जहां भी जाते थे कहीं कहते थे 2 करोड़ युवाओं को 1 साल में रोजगार दूंगा, कहते थे 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, कहते थे कि किसानों की जिंदगी बदल दूंगा, आमदनी दुगनी कर दूंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब जब नरेंद्र मोदी आते हैं, कल आएंगे, तो वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? 15 लाख रुपए देने की बात क्यों नहीं करते? किसानों की आमदनी की बात क्यों नहीं करते? नोटबंदी की बात क्यों नहीं करते? गलत जीएसटी की बात क्यों नहीं करते? जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ 3 कानून जो उन्होंने लागू किए, उसकी बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कहते कि नोटबंदी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, जो कोविड के समय उनका रिएक्शन था, उसके कारण हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई? नरेंद्र मोदी जी ये क्यों नहीं कहते कि आज हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है? मणिपुर में आके ये क्यों नहीं कहते कि हमने मणिपुर के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस थे, छोटी दुकानें जो थी, नोटबंदी करके उन सब को नष्ट कर दिया? नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये सच्चाई है। यहां आएंगे, कहेंगे किसानों की मदद करनी है,
3 कानून लागू करके जो किसानों का है उनसे उसको छीनने की कोशिश करेंगे। एक तरफ मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात करेंगे, दूसरी तरफ नोटबंदी करेंगे। नोटबंदी क्यों की? गलत जीएसटी क्यों लागू की? 2-3 बड़े उद्योगपतियों की मदद करने के लिए गलत जीएसटी, नोटबंदी उन्होंने की। और अब यहां he wants to destroy your future by creating palm oil plantations. He wants to take your beautiful state and he wants to create palm oil plantations. Now I want to ask you, who exactly are these palm oil plantations going to help? Are they going to help the people of Manipur? Or are they going to help companies like Patanjali? Are they going to help the 2 or 3 really large businesses in the country? The same businesses Notbandi helped, the same businesses if flawed GST helps, the same businesses the farm laws are designed to help. That is not our vision for Manipur. We are not interested in helping Baba Ramdev and punishing the people of Manipur. That is not our interest. We are interested in protecting the future of the people of Manipur. And that is why we are committed to guaranteeing MSP for horticultural products. That is why we want to make Manipur self-sufficient in rice production. That is why we want to expand irrigation facilities so that farmers will be able to grow 2 to 3 crops a year. This is the difference between the visions. They want to help 1 or 2 large business people. They want to transform Manipur into palm oil plantations. We want to empower the rice farmers of Manipur. We want to transform horticulture in Manipur. We want to guarantee a minimum price to the farmers of this wonderful state. Let's talk about the real strength of this state. And I can see many of you sitting here in the front rows, the women of Manipur. BJP talks about women. I want to ask you, how many IMA markets has the BJP created over the last 5 years? The Congress party created a unique market, an instrument for empowering the women of this wonderful state. Probably the only market in the country which is fully controlled and run by women. And what did the BJP do to that market? Did they improve it? Did they strengthen it? Did they expand it? No. What we had built, they weakened. They destroyed. How is that the empowerment of women? We built one IMA market
We are committed to building many more EMA markets in Manipur. But by far, our biggest commitment is to guarantee 1/3 reservations for women in Manipur. मैंने रोजगार की बात की और मैंने बताया कि पूरे देश में बीजेपी ने जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, उन पर आक्रमण किया। नोटबंदी, गलत जीएसटी और कोविड के समय जो उनके एक्शंस थे, उससे जो लोग हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, छोटे दुकानदार, बीजेपी ने उनकी कमर तोड़ दी। आज पूरे देश में रोजगार नहीं पैदा होता। यही हालत मणिपुर में है और मणिपुर के युवा इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कांग्रेस पार्टी मणिपुर में एमएसएमई सेक्टर को रिवाइव करेगी और हमारा फोकस जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस होते हैं, जो देश को और मणिपुर को रोजगार देते हैं, उनकी रक्षा और उनको सरकार की पूरी सपोर्ट देने का काम करेगी। यहां मैंने हॉर्टिकल्चर की बात की, मगर हमारी सरकार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और टूरिज्म पे फोकस करेगी। फूड पार्क लगाकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे फोकस कर मणिपुर के किसान सीधा जो उगाते हैं, सीधा वो फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स में जाकर बेच पाएंगे और उनको डायरेक्ट जेब में पैसा मिलेगा। You saw what the Prime Minister did during COVID. The whole world was suffering from this virus. On numerous occasions in Parliament, I told the government that COVID is going to devastate India. We need to take action. We need to prepare ourselves against COVID. I was ridiculed by the BJP, by the government. And the Prime Minister, his solution, his fascinating solution to the problem of COVID was to tell the people of India, Thali bajao. Thali बजाओ, वायरस भाग जाएगा। You understand the vision these people have. Probably the only prime minister, leader in the world whose reaction to a virus was Thali bajao. You're laughing, but he is our prime minister. You know, these are the ideas that the Prime Minister of India has. These are the ideas, some of which he will give you tomorrow. You know, and then when Thali Bajao failed, he came out with a new one. Mobile phone की लाइट जलाओ, पहले थाली बजाओ, फिर मोबाइल फोन की लाइट जलाओ।
ऑक्सीजन का सिलेंडर तो नहीं दूंगा, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, अस्पताल में पलंग नहीं मिलेगा, थाली बजाओ, लाइट जलाओ। और वही मणिपुर में हुआ। हजारों लोग बिना ऑक्सीजन के, बिना वेंटिलेटर के मणिपुर में मरे। कोविड वैक्सीनेशंस हर स्टेट में लगे, मगर मणिपुर का रिकॉर्ड सब स्टेट से खराब है। तो आपने इस सरकार का काम देखा है, उनके वायदे आपने सुने हैं, और आप कांग्रेस पार्टी को भी पहचानते हो, जानते हो। हम सब लोगों की सरकार चलाते हैं। हम आपकी हिस्ट्री, आपका इतिहास, आपका कल्चर, आपकी भाषा, इन चीजों की आदर करते हैं। हम यहां सीखने आते हैं। हम हिंदुस्तान को यूनियन ऑफ स्टेट्स मानते हैं। हमारे लिए ये सब प्रदेश जो हैं, इन सब की जगह एक ही है। उत्तर प्रदेश मणिपुर से बड़ा है, मगर उत्तर प्रदेश की जनता और मणिपुर की जनता हमारे लिए एक जितनी जरूरी है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उत्तर प्रदेश की भाषा, उत्तर प्रदेश के संस्कार, उत्तर प्रदेश के इतिहास की रक्षा करनी है। और जिस प्रकार हम उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बाकी प्रदेशों की हिस्ट्री, भाषा, इतिहास की रक्षा करते हैं, वैसे ही उतने दम से ही हम मणिपुर की भाषा, मणिपुर के इतिहास, मणिपुर की हिस्ट्री की रक्षा करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मणिपुर के भविष्य, मणिपुर को आगे ले जाने के लिए सिर्फ हमारे पास समझ है। हम चाहते हैं कि मणिपुर को मणिपुर के लोग चलाएं। हम चाहते हैं कि मणिपुर की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, कल्चर है, ये पूरे हिंदुस्तान में फैले और पूरा हिंदुस्तान मणिपुर से सीखे और मणिपुर भी बाकी प्रदेशों से सीखे। और मैं आपको स्टेज से कहता हूं कि बीजेपी के लोग कुछ भी कह लें, कुछ भी सोचे, मगर कांग्रेस पार्टी मणिपुर के इतिहास को, कल्चर को, हिस्ट्री को, भाषा को प्रोटेक्ट करेगी। आप यहां दूर दूर से आए, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आज बारिश थी, आपको कष्ट भी हुआ होगा,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। थगतचारी, थगतचारी, थगतचारी। You can call him. How many? 50, sir. I would request all the candidates to stand with Rahul Gandhi ji. Please, all the candidates should come and stand with Rahul Gandhi ji so that our audience can witness you. Rahul,